बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉप ग्रोइंग स्काई स्क्रैपर्स। क्रॉप ग्रोइंग क्या आती है? फसलें उगाना। स्काई स्क्रैपर्स मतलब बिल्डिंग्स के ऊपर। बाय द ईयर, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं। बाय द ईयर 2020 नियरली 80% ऑफ द अर्थ पॉपुलेशन विल लिव इन अर्बन सेंटर्स, अप्लाइंग द मोस्ट कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स टू करंट डेमोग्राफिक ट्रेंड्स। The human population will increase by about 3 billion people by then. An estimated 10 hectares of new land, about 20% larger than Brazil, will be needed to grow enough food to feed them. If traditional farming methods continue as they are practiced today, at present मतलब recent today, हम लोग इसके ज़्यादातर सिनोनिम्स पे फोकस रखते हैं। Throughout the world, over 80% of the land that is suitable for raising crops is in use historically. Some 15% of that has been laid waste by poor management practices. What can be done to ensure enough food for the world's population to live on? 15% that has been laid waste. हम लोग क्या करते हैं, डेट, मंथ्स, ईयर्स और नाउन्स को अंडरलाइन कर लेते हैं। डेट्स, मंथ्स, ईयर्स और नाउन्स, इन सबको अंडरलाइन कर लेते हैं। वर्टिकल फॉर्म्स, सेफ ecosystem, 10,000 years, 60% of the human population, vertical farming, single story greenhouse, sunlight, vertical farming, environment। सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। चूज नो मोर देन 2 वर्ड्स, 2 लफ्ज़ों से ज़्यादा आपने चूज़ नहीं करना। अगर 3 लफ्ज़ लिखेंगे तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है 1 to 7 है, इंडोर फार्मिंग। हम लोग क्या करने लगे, समरी। समरी जो है इसमें सबसे ईजी होती है। सम फूड प्लांट्स इंक्लूडिंग डैश आर ऑलरेडी ग्रोन इंडोर्स। इंडोर फार्मिंग पे हम चले जाएंगे। सम फूड्स प्लांट्स इंक्लूडिंग डैश एक और चीज़ है जिसको मतलब ING जहाँ पे भी आ जाए वहाँ पे आर आता है। ये आपको भी पता है कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है और ज़्यादा मतलब जहाँ पे प्लूरल थिंग्स होती हैं प्लूरल थिंग्स होती हैं उनकी बात हो रही है। इंडोर फार्मिंग is not new since hothouse production of tomatoes and other produce has been in bag of some time। tomatoes, तो हमारा आंसर क्या है, tomatoes मतलब are including tomatoes are already grown indoors। tomatoes। नेक्स्ट पे आए ज़रा। Vertical farms would be located in dash, meaning that there would be less need to take them long distances to customers। Vertical farms would be located in, किधर पाए जाते हैं, लोकेटेड इन, इनका मतलब में, मीनिंग दैट देयर वुड बी लेस नीड टू टेक लॉन्ग डिस्टेंसेस टू कस्टमर्स। लेस नीड मतलब उनको ज़रूरत नहीं पड़ती कस्टमर्स तक ले जाने के लिए। वर्टिकल फार्म्स वुड बी लोकेटेड इन, किधर पाए जाते हैं, many believe an entirely new approach to indoor farming, buildings in which food crops are grown in environmentally controlled conditions situated in the heart of urban centers. They drastically reduce the amount of transportation required for bring food to consumers।
ये वाली जो लाइन है ये हमें आंसर बता रही है। तो कहाँ पे पाए जाते हैं? हार्ट ऑफ द अर्बन सेंटर। अर्बन क्या होते हैं? शहरी। लोकेटेड इन अर्बन सेंटर्स। वर्टिकल फार्म्स could use methane from plants and animals to produce। अब हमने ढूंढना क्या है? मीथेन। वर्टिकल फार्म्स could use methane from plants and animals to produce। प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या पैदा करने के लिए? प्रोड्यूस। अब हम देखेंगे मीथेन किधर है। The supporters of vertical farming claim many potential advantages for the system. For instance, crops would be produced all year around, as they would be kept in artificially controlled optimum growing conditions. There would be no weather related crop failure due to droughts। मीथेन किधर है? हमने मीथेन का वर्ड ढूंढना है। इन्फेक्शियस डिजीजेस, मीथेन। अब हम दोबारा अपनी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे कि क्या बात हो रही है। द कंजप्शन ऑफ डैश वुड बी कट, सॉरी, वर्टिकल फार्म्स कुड यूज मीथेन फ्रॉम प्लांट्स एनिमल टू प्रोड्यूस। मीथेन वो प्लांट्स और एनिमल से यूज़ करते हैं तो क्या पैदा करने के लिए? although the system would consume energy, it would return energy to the grid via methane generation from compositing non-edible parts of plants. It would also drastically reduce fossil fuels using by cutting out the need for tractors and plows and ships। आंसर क्या है हमारा? टू प्रोड्यूस एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए ज़रा। द कंजम्पशन ऑफ डैश मतलब किस चीज़ का इस्तेमाल? वुड बी कट बिकॉज एग्रीकल्चरल व्हीकल्स वुड बी अननेसेसरी। द कंजम्पशन ऑफ डैश वुड बी कट। इट वुड आल्सो ड्रास्टिकली रिड्यूस फॉसिल फ्यूल यूज़। रिड्यूस क्या करेगा? फॉसिल फ्यूल। इट वुड, द कंजम्पशन ऑफ डैश वुड बी कट द कंजम्पशन ऑफ फ्यूल। The fact that vertical farms would need light in is a disadvantage। लाइट का लफ्ज़ हम लोग ढूंढ लेंगे। नेक्स्ट वाला हमारा क्या होता है? हमेशा की आइडिया होता है। इस लास्ट लाइन को ज़रूर पढ़ा करें आप लोग। द फैक्ट दैट वर्टिकल फार्म्स would need dash light is a disadvantage। Light is that plants would require artificial light। One form of vertical farming involves planting in dash which are not fixed। किस चीज़ के अंदर उन्होंने पौधे लगाए होते हैं जो कि फिक्स नहीं होते? प्लांटिंग इन डैश। One form of vertical farming involves planting in dash which are not fixed। Which are not fixed क्या चीज़ें हैं? किस चीज़ के अंदर प्लांटिंग होती है? नहीं। आर्टिफिशियल लाइटिंग, सनलाइट। Stacked trays that move on rails। Stacked trays, trays। Next पे ज़रा। The most probable development is that food will be grown on dash in towns and cities। The most probable development is that food will be grown on dash in towns and cities। किस चीज़ के ऊपर उगाया जाएगा? ये आप लास्ट में देख लें ज़रा। अर्बन है, रूफ टॉप्स। तो आंसर क्या है हमारा? रूफ टॉप्स। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ट्रू क्या होता है? जो स्टेटमेंट हमारी ट्रू होती है। फॉल्स क्या होता है? जो स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होती है। नॉट गिवन क्या होता है? जो दिया ही नहीं गया होता। ट्रू।
Methods for predicting the Earth's population have recently changed. Methods for predicting the Earth's population have recently changed. क्या वो अभी अभी चेंज हुए हैं? Earth's population किधर है स्टूडेंट्स? ये आ गया फर्स्ट पैराग्राफ. Methods for predicting the Earth's population have recently. Methods कहाँ पे है? Will be needed to grow enough food to feed them if traditional farming methods continue as they are practiced today. At present, throughout the world, over 80% of land that is suitable for raising crops is in use. Historically, some 15%. तो हमारा आंसर क्या है इसका? Methods for predicting the Earth's population have recently changed. तो हमारा आंसर क्या है? ऐसी कोई बात नहीं हुई, कोई मेथड्स की बात नहीं हुई, जिस हैव रिसेंटली चेंज की बात नहीं हुई, तो हम लोग इसको नॉट गिवन कर देंगे. Human beings are responsible for some of the destruction to food producing land. Human beings. Human beings क्या आते हैं? इंसान. Responsible for some of the destruction to food production land. The human population will increase by about 3 billion people by then. An estimated 10 hectares of new land, about 20% larger than Brazil, will be needed to grow enough food to feed them. If traditionally farmers' method continue as they are practiced today, at present throughout the world, 80% land that is suitable for raising crops is in use. Instead 15% that has laid waste. तो ये हमारा आंसर क्या है? ट्रू है, क्योंकि इंसान ही रिस्पॉन्सिबल है. नेक्स्ट पे आ जाए ज़रा. द क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड इन वर्टिकल फार्म्स विल डिपेंड ऑन द सीजन. किस पे डिपेंड करती है? सीजन पे. वो विल डिपेंड ऑन द सीजन, फ्यूचर में सीजन पे डिपेंड करेंगे. अब हम देखेंगे सीजन किधर है. Will depend on the season. Ecosystem that have been cast for horizontal farming. It took 7-10 years to learn how to grow most of the crops we now take for granted. Along the way, we despoiled most of the land we worked, often turning verdant natural zones and semi-arid deserts. Within this, the crops are produced in vertical farm will depend on the season. Will depend on the season. यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम लोग. यहाँ पे हमें इसका आंसर नहीं मिला, तो हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे. Varied food supply routes production of all crops and the ecosystem that have been sacrificed for horizontal farming. ये आ गया हमारा सीजन. तो जब तक हमें वर्ड नहीं मिलता तब तक हम अपना आंसर नहीं दे सकते. तो आंसर क्या है आपका? यहाँ पे ज़रा देख लें. द क्रॉप्स प्रोड्यूस वर्टिकल विल डिपेंड ऑन द सीजन.
bearing plants to the rigors of the great outdoors and can do no more than hope for good weather year. However, more than no rapidly changing climate, that is not what happens. Massive floods, long droughts, hurricanes, and severe monsoon take their toll each year, destroying millions of tons of valuable crops. आंसर हमारा क्या है? Depend on the season. False. फॉल्स कैसे हुआ इसको जरा देख लें. Great outdoor and can do no more than hope for a good weather year. However, more often than not, no. Due to rapidly changing climates, what happens? Massive flood droughts take their toll each year, destroying millions of tons of valuable crops. Next पे आ जाए जरा. Some damage to food crops is caused by climate change. ये एंड वाली लाइन हम लोगों ने भी अभी पढ़ी है. मिलियंस ऑफ टन वैल्यूएबल डिस्ट्रॉइंग मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ वैल्यूएबल क्रॉप्स. तो ये हमारा क्या है? आंसर ट्रू है. Fertilizers will be needed for certain crops in vertical forms. Fertilizers needed. Artificially controlled optimum growing condition. There would be no weather related crop failure due to droughts, floods, and all the food could be grown originally, eliminating need for herbicides. ज़रूरत नहीं है. Eliminating the need for herbicide thus. तो आंसर हमारा क्या है यहाँ पे? Will be needed for certain vertical forms. Fertilizer चाहिए होती है, वो कहते हैं नहीं चाहिए होती है. आंसर क्या है हमारा? फॉल्स है. नेक्स्ट पे वर्टिकल फार्मिंग विल मेक प्लांट्स लेस लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय इन्फेक्शियस डिजीजेस. इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है? ये इन्फेक्शियस डिजीजेस. The system would greatly reduce the incidence of many infectious diseases that are acquired at the agricultural interface. Although the system would consume energy, it would return energy. तो आंसर हमारा क्या है यहाँ पे? ट्रू है. Will make plants less likely to be affected. Less likely. Greatly reduce the incidence of many. आंसर हमारा यहाँ पे क्या आ गया? ट्रू.